हेलो फ्रेंड्स। ये वीडियो सीरीज थायराइड एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के एमसीक्यूज पे बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन इज वियर्स ट्रायंगल और रेडियस ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय ऑल एक्सेप्ट ऑप्शन ए कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ऑप्शन बी इंफीरियर थायराइड आर्टरी, ऑप्शन सी रिकरेंट laryngeal nerve, ऑप्शन डी सुपीरियर laryngeal nerve. Answer is superior laryngeal nerve. Explanation is Weir's triangle, also known as Riddle's triangle, is a surgical landmark in the neck that helps surgeon locate and protect the recurrent laryngeal nerve during procedures like thyroidectomy. Its boundaries are common carotid artery as the base, inferior thyroid artery as the superior border, and the recurrent laryngeal nerve forming the third side. जो प्रोसीजर्स हम करते हैं थायराइड की सर्जरीज में लाइक थायराइडेक्टोमी, हेमी थायराइडेक्टोमी, इसमें रिकरेंट laryngeal nerve की इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। तो ये सर्जिकल एनाटमी हमको हेल्प करती है इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को प्रिजर्व करने में। जो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स थायरैक्टोमी करते समय जो जिनको प्रिजर्व करना ज़रूरी होता है वो है रिकरेंट laryngeal nerve, सुपीरियर laryngeal nerve। तो वियर्स ट्रायंगल ही ऐसी एक सर्जिकल लैंडमार्क है। इसकी एनाटमी को समझते हुए हम रिकरेंट laryngeal nerve को प्रिजर्व करते हैं। रिकरेंट laryngeal nerve जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है क्योंकि ये लैरिंग्स की जो मसल्स होती हैं उनकी नर्व सप्लाई करता है, ये सेंसरी नर्व सप्लाई भी करता है। तो जो वियर्स ट्रायंगल है वो रिकरेंट लैरिंज उसकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो बनाती है कॉमन कैरोटिड आर्टरी, inferior thyroid artery or the recurrent laryngeal nerve. Question 2. Superior thyroid artery is a branch of option A external carotid artery, option B internal carotid artery, option C common carotid artery, option D subclavian artery. Answer is A external carotid artery. The superior thyroid artery primarily originates from the external carotid artery. It is the first branch of external carotid artery at the level of greater cornu of the head bone. Next question. Inferior thyroid artery is a branch of external carotid artery, common carotid artery, C internal carotid artery, D thyrocervical trunk. Answer is D thyrocervical trunk. The inferior thyroid artery is typically a branch of the thyrocervical trunk. The thyrocervical trunk in turn branches from the subclavian artery. तो जो आर्टरियल सप्लाई है थायराइड की वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी सुपीरियर थायराइड आर्टरी और इंटरनल थायराइड आर्टरी से होती है। सुपीरियर थायराइड आर्टरी जो है वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से ओरिजिन होती है और जो इन्फीरियर थायराइड आर्टरी है वो थायरोसर्वाइकल ट्रंक से ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन्स ऑफ थायराइड डज नॉट ड्रेन इनटू द इंटरनल जुगुलर वेन? ऑप्शन ए सुपीरियर थायराइड वेन, ऑप्शन बी मिडिल थायराइड वेन, ऑप्शन सी इंफीरियर थायराइड वेन, ऑप्शन डी कोकर्स थायराइड वेन। अब आंसर इज सी इंफीरियर थायराइड वेन। वीनस ड्रेनेज जो होता है थायराइड ग्लैंड का वो मेनली सुपीरियर थायराइड वेन, मिडिल थायराइड वेन और इंफीरियर थायराइड वेन से होता है। जो सुपीरियर एंड मिडिल थायराइड वेन होती है वो इंटरनल जुगुलर वेन में जाकर ड्रेन करती है और जो इंफीरियर थायराइड वेन होती है वो ब्रेकियोसेफेलिक वेन में ड्रेन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट T4 and T3? Option A T4 is converted into T3, option B T3 is active form and more physiologically important, option C T3 acts within hours, option D T4 acts within hours. Answer is D T4 acts within hours. T3 and T4 are thyroid hormones that play a crucial role in regulating metabolism, growth, and development. T4 is the primary hormone produced by the thyroid gland, while T3 is more active form that influences cellular activity. Both hormones are essential for maintaining normal body functions, including heart rate, body temperature, and brain development. T4, primarily produced by the thyroid gland, it is converted into T3 in various tissues, particularly the liver and kidney, through a process called deiodination. T4 is the major circulating thyroid hormone. It has a weaker effect on metabolism compared to T3. T3 is also produced by the thyroid gland and also through the conversion of T4 in other tissues. T3 is the active form of thyroid hormone. It is responsible for regulating metabolic rate, heart rate, muscle control, brain development, and bone health. T3 is significantly more potent than T4 in terms of metabolic activity, mainly within days, and T3 acts mainly within hours. Next question, which of the following procedure is performed in thyroglossal cyst and fistula? Option A hemithyroidectomy, option B Dunhill operation, option C cyst trunk operation, option D near total thyroidectomy. Answer is C cyst trunk procedure. The cyst trunk procedure is a surgical operation performed to remove the thyroglossal duct cyst and their associated tracts, which are common congenital midline neck masses. The procedures involve excising the cyst,
the thyroglossal duct, the middle portion of the hyoid bone, and a core of tissue extending up to the base of the tongue. It is considered the standard surgical treatment for thyroglossal duct cysts and significantly reduce the risk of recurrence. Next question: which of the following is the most common site of thyroglossal cyst? A. Beneath the foramen cecum. B. Suprahyoid. C. Subhyoid. D. Thyroid cartilage. Answer is C. Subhyoid. Thyroglossal duct cyst is a type of neck lump or mass that forms from remnants of the thyroglossal duct, a structure that helps the thyroid gland descend during fetal development. These cysts are typically located in the midline of the neck, often near the head bone, and are generally benign. Possible sites are A. Beneath the foramen cecum. B. In the floor of the mouth. Uh, C. Suprahyoid. D. Subhyoid. And E. On the thyroid cartilage. The false about Pendert syndrome. Option A, congenital hypothyroidism. Option B, congenital sensory neural deafness. Option C, defects in the pendrin protein. Option D, associated with hyperthyroidism. Answer is D, associated with hyperthyroidism. Pendert syndrome is a genetic disorder characterized by sensory neural hearing loss and goiter enlargement of the thyroid gland, which can be associated with hypothyroidism. Pendert syndrome is primarily caused by a deficiency or malfunction of the pendrin protein, which is encoded by SLC26A4 gene.